नाउ लोगो रेडी हो चुका है, लेकिन सिर्फ लोगो से चैनल प्रोफेशनल नहीं होता। जब कोई व्यूअर आपका चैनल ओपन करता है, सबसे पहले क्या देखता है? बैनर। आज के वीडियो में हम कैनवा का यूज करके क्रिएट करेंगे CSIT हब का प्रोफेशनल यूट्यूब बैनर, स्टेप बाय स्टेप, बिगिनर फ्रेंडली, स्ट्रेटेजिक वे विथ मी। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपका चैनल बिल्कुल प्रोफेशनल टेक ब्रांड जैसे लगेगा। So which steps we have to follow? कैनवा ओपन करो, सर्च बार में टाइप करो YouTube channel art. Different types of banners are available. So we are going to select YouTube banner. अभी हमें YouTube का banner create करना है. So select YouTube banner. Now we are going to create from blank. Automatically size set हो जाएगा 2560 into 114 px. यूट्यूब बैनर में सेंटर का एरिया ही मोबाइल में विजिबल होता है, सो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट सेंटर में ही रखो, एजेस में इम्पोर्टेंट टेक्स्ट मत रखो। दिस इज प्रोफेशनल ब्रांडिंग रूल। थीम बेस प्रॉपरली, बैकग्राउंड चेक करो, टेक्स्ट ऐड करो विथ हेडिंग, विथ सब हेडिंग, सेट इट्स फॉन्ट एंड कलर्स। टैगलाइन, टैगलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टैगलाइन से व्यूअर्स को पता चलता है कि चैनल किस टॉपिक पर है, उन्हें यहाँ क्या मिलेगा। सो टैगलाइन शुड बी स्मॉलर देन मेन हेडिंग। एक स्मॉल टेक्स्ट भी आप ऐड करो, लाइक न्यू वीडियोस एवरी वीक। ये कंसिस्टेंसी का ट्रस्ट बिल्ड करता है। सोशल मीडिया आइकॉन्स जो है वो हमें ऐड करने हैं, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम आइकॉन, यूट्यूब आइकॉन, लिंक्डइन। सो कीप देम स्मॉल एंड अलाइन। So first we will check for template. When you will select one, you will get more like these options also. So whatever you like, you can take it. Whatever suits to your channel, you can take it. Our channel is also educational, but it's not only educational, it's technical education. Okay, align it properly. Technical education channel. Here you can add your photo, that will be completely optional, but it is powerful. सो राइट साइड में अपनी प्रोफेशनल फोटो आप ऐड कर सकते हो, फॉर्मल लुक देती हो, स्माइल विल बी देयर ऑन योर फेस एंड हाई रेजोल्यूशनल इमेज. Okay, it builds personal brand connection. We'll keep this photo as it is for time being, later on we'll change it. So after that we have to check alignment of all elements. क्लिक पोजीशन, अलाइन सेंटर, अच्छे से अलाइन करो, चेक करो एलिमेंट्स बैलेंस है, क्लीन है, क्राउडेड तो नहीं है। वाइट स्पेसेस जो है वो प्रोफेशनल लुक देता है। ओके, सो इन दिस सिंपल वे यू कैन क्रिएट बैनर. If you want to add different elements, you can add it from here. If you want to add text, तो ये text आप यहाँ से add कर सकते हो. So this is the simple way to create a banner by using Canva. Once again, important setting to share it, how to download it. So click on share, then check for the download option. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ हमने एक लोगो एंड बैनर डिजाइन नहीं किया है, हमने CSIT की डिजिटल आइडेंटिटी को कंप्लीट किया है. याद रखो, लोगो रिकॉग्नाइजेशंस देता है, बैनर पोजिशनिंग देता है. अगर बैनर क्लियर है तो व्यूअर इंस्टेंटली समझ जाता है ये चैनल किसके लिए बना है. ब्रांडिंग इज नॉट डेकोरेशन, ब्रांडिंग इज कम्युनिकेशन. In next video we will create thumbnails, so stay tuned with CSIT Hub.